Hello everyone, today we are going to see the helix on cylinder. Okay, so problem is likewise, draw a helix on cylinder of base diameter 60 mm and axis length 100 mm. Okay, and you have to draw the helix for one complete revolution. Okay, so that is the problem. Now in case of a helix, first see what I mean by helix. So in case of helix, let's suppose if you are having a cylinder, if you touch pencil with respect to cylinder, okay, and now give the rotations initially to the cylinder by keeping pencil as a constant. So what happens? So, yes, and again move the cylinder axially upward or in downward direction. So whatever may be the path traced by the pencil, that is called as helix. Okay, so now here we will see how this types of problem can be solved. So here हेलिक्स ऑन सिलेंडर इज गिवन टू यू और सर्कल का बेस डायमीटर आपको दिया है हेलिक्स का सिलेंडर का 60. सो इनिशियली डायमीटर इज 60, सो यू हैव टू टेक द रेडियस ऑफ 30 इन कंपास. ओके, फर्स्ट ड्रॉ द टॉप व्यू फॉर द cylinder. Okay, likewise. Okay, now again circle is here. Now yes, now divide the circle into 12 equal parts or 8 equal parts. Choice is yours. So here I will divide circle into 8 equal parts. Okay, so circle is here. The diameter of this circle, here it is 560 from this to this. Okay, okay. Now इसके ऊपर एक draw vertical line likewise. Now project all this projection in this view. पूरा पोजीशन इन फ्रंट व्यू में लेना पड़ेगा. ओके, नाउ एक्सिस हाइट इज 100, so you have to mark 100 above this line. Okay, so at here you will get 100. Okay, so in front view, yes, you will get this type of box. Okay, so here this height total height, axis height is given to you, and this axis height is 100. Okay, again I will give it number likewise 1 2 3 4 5 6 7 8. so यहाँ पे मिलेगा आपको 1 1 डैश, यहाँ पे 2 8 2 डैश 8 डैश, यहाँ पे 3 7 3 dash 7 dash. Okay, 4 6 4 dash 6 dash 5 5 dash. So here this is nothing but top view of cylinder, it is nothing but front view of cylinder. Okay, and axis O yes, so यहाँ पे मिलेगा आपको O, यहाँ पे मिलेगा yes, O dash yes dash. Okay, now you have to draw the helix. So now these points up, you can mark the any angle from this side. Okay, okay, so initially you have marked the any angle likewise. Okay, now circle is divided into 8 equal parts. So distance between any 2 point on circle, okay, you have to take in compass, and that distance you have to mark on this line. Okay, how many times? 8 times. First part, second part, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Okay, like mark the distance. Okay, 8 times. Okay, now okay, so you have divided this part into 8 equal parts. Now जो भी आपका लास्ट पार्ट है, ओके, ज्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू
join with respect to the top side. Again parallel, yes, okay, likewise. Okay, दिस ऐसा लाइन आपको निकालना होगा. सो दैट अगेन जो हाइट है दैट इज अगेन डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड 8 पार्ट्स. नाउ थ्रू ईच एंड एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, ओके, लाइकवाइज. नाउ 1 1 देखना होगा. यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट P1. 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, लाइकवाइज 1 अगेन इस लाइन पे कौन सा है 2 एंड 8 है. सो 2 2 यहाँ पे मिलेगा आपको P2. अगेन ऑन सेम लाइन 2 हो गया. अगेन 3 3 यहाँ पे मिल गया आपको P3. अगेन 4 हॉरिजॉन्टल 4 देखना होगा आपको P4. 5 5 ओके, यहाँ पे P5 मिल गया आपको. उसके बाद 6 ओके, यहाँ पे P6 मिलेगा. 7 हॉरिजॉन्टल 7 पे P7. उसके बाद यस P8 एंड अगेन लास्ट पॉइंट P1. ओके, लाइकवाइज. नाउ ओके, फर्स्ट join the curve smoothly. Okay, okay, likewise. and now उसके जो भी हाफ पोर्शन है दैट शुड बी अ डार्क वन. यहाँ से आपको उसको डार्क करना होगा. दैट इज द पोर्शन बिहाइंड. ओके, बिहाइंड द पोर्शन. ओके, सो हियर ओके, सो हियर why the portion is dotted. let's suppose आप यहाँ पे खड़े हो. so this portion this part is visible to you, so that's why okay हमने ये पार्ट उसको विजिबल किया. बैक साइड पोर्शन दैट इज नॉट विजिबल टू यू. ओके, नाउ दिस पोर्शन ओके, ये जो पूरा कर्व है ओके उसको हम बोलेंगे यस हेलिक्स. ओके, दिस टोटल कर्व इज कॉल्ड एज हेलिक्स ऑन सिलेंडर. ओके, सो एग्जाम में आपको ये कर्व डार्क करना होगा. इसमें से पहला जो हाफ पार्ट दैट शुड बी continuous, half जो part है that is nothing but a dotted one. Okay, so you can use this methodology to draw the helix on a cylinder. Okay, so thank you for watching this video.